Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, resources and their types. And my dear students, today is the review of your unit because today we will finish the unit. और आज मैं आपकी assessment भी लूँगी. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So my dear students, in the previous lecture, we made a project. So quickly answer the questions related to it. What are natural resources? Pause the video and answer the questions one by one. What are natural resources? Very good. What are human resources? Very nice. What are capital resources? Excellent, very good. अच्छा, अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई हैं. Very nice. So my dear students, क्योंकि आज review है हमारा, so all the student learning outcomes are given on page number 13. Here you can see them and we have covered all the objectives. One by one we will revise them और मैं आपको review दूंगी हर reading page का. I will also ask some questions and by the end I will take an assessment. So my dear students, let's quickly start with the Islamic perspectives related to this unit. He created the heavens without any visible support, and he placed firm mountains on the earth in case it should shake under you, and he spread all kinds of animals around it. We sent down water from the sky with which we made every kind of good plant grow on earth. So my dear student, this Islamic perspective is related to the resources around you. Next, and give full measure when you measure out and weigh with a true balance. This is fair and better in the end. So my dear students, जब भी नाप तोल करें और कोई भी business dealing करें वो हमारी हमेशा fair होनी चाहिए. Okay my dear students, and be patient for the sake of your Lord. अल्लाह ताला की खातिर हमें हमेशा जो है वो सब्र करते रहना चाहिए. So my dear students, now is the time for review. So let's move forward. Quickly tell me what is meant by resource. Anything that fulfill our needs is called a resource. What are the 3 types of resources? Very good. Quickly tell me. Very nice. Now my dear students, on page number 14 we discussed about the resource कि कोई भी सप्लाई जो है आपको चीज़ों की जो मिलती है और वो आपको बेनिफिट करती है और वो आप उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स. फिर हमने 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे, ह्यूमन, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विकली टेल मी व्हाट इज अ नेचुरल रिसोर्स. वेरी नाइस, वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने डिस्कस किया था वन बाय वन डिफरेंट रिसोर्सेज को एंड वी स्टार्टेड विद द नेचुरल रिसोर्स. कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरली हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है, जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्स. लाइक ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, these all are called natural resources और ये हमें डिफरेंट तरीके से जो है वो बेनिफिट कर रहे हैं. So we discussed it on page number 14 and 15 and then page number 16 and then we move towards the human resource. Quickly tell me what is human resource. The goods and services provided by human beings are called human resources. List some human resources. Very good. So on page number 16 we discussed about the human resources कि कोई भी ऐसी activities और goods जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए आपको human beings provide करते हैं, जैसे कि doctors, teachers, painters, mechanics, these are all called human resources. So we discussed it on page number 16 and page number 17. हमने different human resources को discuss किया था कि कैसे ये हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं. So my dear students, now quickly tell me what is a capital resource. Very nice. Now quickly name some capital resources. Very good. So on page number 18 we discussed about the capital resources. ऐसे resources, ऐसे goods जो कि इंसान बनाते हैं, they are called capital resources और ये हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं. So हमने काफ़ी सारे capital resources के बारे में पढ़ा था, जैसे कि computers, trucks, mobiles, these all are called capital resources. Okay, then we move towards list some goods and services in your school. कौन कौन से गुड्स आपके स्कूल में हैं, यानी कि एनी टचेबल आइटम, टेबल्स, चेयर्स,
पेन, पेंसिल, बुक्स, दीज आर ऑल कॉल्ड गुड्स. और कौन कौन सी सर्विसेज हैं? Very nice. What is the relationship between a buyer and a seller? Excellent. So my dear students, in this lecture we studied about goods and services. कोई भी touchable item जो कि आपकी ज़रूरत के लिए बनाया जाता है, that is called a good. और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है ह्यूमन बींग्स की तरफ से, that is called a service. जैसे कि शॉपकीपर्स, painters, mechanics, gardeners, these are called services. They are providing you with different services. और buyers और sellers के बारे में पढ़ा था कि जो आपको चीज़ें बेचता है, the person who sell things is called a seller. और आप उससे चीज़ें खरीद रहे हैं, so you are a buyer. और in return money exchange होता है. So this is the relationship between buyer and seller. Then we move towards interdependence. Quickly tell me what is interdependence. याद है आपको? The mutual dependence between two or more people is called interdependence. So interdependence में हमने ये पढ़ा था कि दोनों की जो है, for example two people हैं, buyer और seller का ही आप relationship ले लें कि आप चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि आपको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है और in return आप seller को पैसे दे देते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत पैसों से पूरी कर ले. So this is a mutual dependence which is called interdependence. And then we move towards scarcity. जब भी किसी चीज़ की shortage हो जाती है, what is scarcity? जब भी किसी चीज़ की shortage हो जाती है, that is called scarcity. And then we move towards the economic choices. जब भी आपको अपने बजट में रहते हुए कोई चॉइस मेक करनी पड़े ताकि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपका बजट भी फुलफिल हो जाए, that is called an economic choice. So हमने economic choices के बारे में यहाँ पर पढ़ा था. And now my dear students, we will move towards the practice. For practice, I will provide you with an assessment. So my dear students, you can simply download this assessment from the description box below, or you can get this in print form by your teacher. So my dear students, let's quickly have a look at the assessment. Write down your name and your class at the top. First part is resources and their types. So how human resources are different from capital resources? Also give examples. आपको differentiate करना है between capital resources and human resources और आपको दोनों की examples भी देनी है. So आपका टेस्ट है, मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा रिविजन कर चुके हैं. Just do it, okay? Next is a situation. मैंने आपको एक situation यहाँ पे दी है क्वेश्चन नंबर 2 में. इसको केयरफुली सुने और फिर जो है वो आंसर नीचे करें. Ali has 100 rupees. His mother gave him to buy new story book. ठीक है, अली की मदर ने उसको 100 रुपए दिए हैं क्योंकि उसको एक नई स्टोरी बुक खरीदनी है. He goes to the shop to buy story book. वो शॉप पे जाता है स्टोरी बुक खरीदने के लिए. There he saw a new Spider-Man wristwatch. अब वहां पे उसको एक नई स्पाइडरमैन की रिस्ट वॉच नजर आ जाती है जो उसको बहुत पसंद है. The watch costs 100 rupees. वॉच भी 100 rupees की है. He wants to buy the watch, but he needs storybook to improve his reading skills. He has not enough money, so he buys the storybook because he already had a wristwatch at the home. So my dear students, यहाँ पे आपको 3 चीजें इसमें से separate out करनी है. What Ali wants, scarcity कहाँ पे आपको नजर आ रही है यहाँ पे, और उसकी economic choice बताएं कि उसने कैसे जो है वो अपनी choice जो है वो make की है. So you have to write डिवाइड करें सिचुएशन को इन 3 पोर्शंस के अंदर कि वेयर यू सी द वांट, वेयर इज स्कैसिटी एंड वेयर इज इकोनॉमिक चॉइस, हाउ ही मेड द इकोनॉमिक चॉइस. सो यू विल राइट डाउन इन 3 columns. Okay, so fill the assessment, complete it, submit it to your teacher. She will grade you, give you marks for this. Okay, my dear students, now is time to read, note down your homework. Simple, read page number 14 till 23. आपको unit number 2 जो है वो complete जो है वो पढ़ना है ताकि आपकी revision भी हो जाए, and if there is any lacking और कोई कमी है आपकी तो वो भी complete हो जाएगी. So my dear students, now is the time for wrap up. My dear students, हमारा unit number 2 complete हो गया है. बहुत ही मज़ा आया मुझे ये unit आपको पढ़ाने में. I hope आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा. So by now all the students are able to define resources, its types, define goods, services, buyers and sellers, recognize interdependence, define scarcity and recognize economic choices. So अब जो है आपको इन तमाम different जो terminologies हैं आपको इनके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है.
I hope you have enjoyed unit number 2. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.